warm morning with me, and today we are going to learn about the continuity and differentiability. So already in the last video हम लोगों ने ये देखे कि what exactly mean the continuity and the differentiation. But once more again we are going to discuss कि what is all this. So first of all, a function is continuous if it can be drawn without picking up the pencil, otherwise it is discontinuous. Now a function is differentiable at a point if there is a defined derivative at that point. जो लिखा है बेटा, this is very important to solve, to evaluate the question based on the continuity and limit. And what is that? A function is differentiable at a point if there is defined derivative at that point. Get it my point? Now जैसे ही आगे बढ़े, so this means that the slope of tangent of line at the point from the left is approaching the same value of the slope of tangent at the point from the right. Now why we are using this word slope of tangent? Because slope of tangent is denoting as y. Y is equal to, we are considering any term, that is y is equal to mx. So dy by dx is equal to m, where this dy by dx is called as slope of tangent, which is generally denoting as the f. Now moving again one step up. Every differentiable function is continuous. Remark this. This is the most important part. That is, if the given function is differentiable function, then it is continuous. But every continuous function need not be necessary that it is a differentiable. And in the NDA examination, as we are doing the crash course for NDA, we are preparing to crack the NDA. It is very important to know what is the exact weightage of that. So in the NDA examination, they are generally asking 5 to 6 questions from this chapter. Now, again revise one thing. Continuity of a point, continuity at a point. So what is mean this? If any function, so what is the nature of function? If any real function, then a function f of x is said to be continuous if at that particular point limit is exist and limit tends to point is equal to limit at a point. If these things are happen, then the given function is continuous at a given point. So when the continuity is satisfied, when left hand limit is equals to right hand limit, and this value again is equal to value of a function at that point. So how we can write limit x tends to a minus f of x itself represent the left hand limit. Then limit x tends to a positive f of x, this represent a right hand limit. And when we are writing as f of a, it means it's a value of function at that point. If above all the condition is not fulfilled, अगर ऐसा हो जाए कि ये condition ही satisfy नहीं हो रहे, then we are calling that the given function is, कैसे हुआ given function is discontinuous. So what are the remarks? If the function is said to be continuous in a domain, it may be a closed, it may be open, then it is said to be continuous at its each point. It means if I say 1 to 7 and function is continuous on its domain, it means function is continuous at 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Move to the second point. A function is said to be continuous if and only if it right hand limit continuous at right, continuous at left and continuous at
each point of its interval. Move to the next one. What are the specific properties of continuous function? So if there are any two different functions, first one I considering as a f of x, second considering as a g of x, and both the functions are continuous in its given domain. दिए हुए फंक्शन अगर उसके डोमेन में कंटिन्यूअस है, then addition of two functions, subtraction of two function, multiplication of function, division of two continuous function are continuous at that point. यानी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस रहा तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन की एडिशन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपका डिवीजन, ये सब कैसे हो जाएगा? ऑल आर द कंटिन्यूअस एट पर्टिकुलर पॉइंट. साथ ही साथ इफ k is any constant, see here k into f of x, where k is any constant, so this constant does not affect the continuity of function. If the function is itself continuous, then k times of function is also continuous. If function is continuous, then its reciprocal also continuous. If function is continuous, then its modulus also continuous. These are some basic properties of continuity. And what are the specific remarks from this? So constant function is always continuous. Constant function भी कैसे रहता है? Continuous रहता है. उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा. पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिनोमियल फंक्शन, दैट इज p of x is equal to a0 plus a1x plus a2x square up to the an x to the power n, and when such type of functions are given, then it is always continuous. Rational function, it means function which gives us the form p upon q, where the value of q is not equals to 0. Then that time also the function is continuous. Exponential function, sine, cosine, tangent, this function, sine, cosine, tangent, it will half of part. Then logarithmic functions are also continuous in its domain. These are the very important terms. Move to the next one. Now, what is mean by exact differentiability? So, if f of x is any real valued function and a is any real number, then the function f of x is said to be, क्या बोल सकते हैं उसे? डिफरेंशिएबल इफ क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो. इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन सेड टू हैव डिफरेंशिएबिलिटी and which is representing like this. Now similarly we can also be right hand limit, left hand limit. So similarly we can write the right hand derivative and left hand derivative. So what exact formula for that? So first one, when we are talking about the right hand derivative, it has the formula limit h tends to 0, f of a plus h minus f of a upon h, and left hand derivative f of a minus h minus f of a upon minus h. These all are about the continuity and differentiability. So is there anything left? So yes, see, a function is continuous but not differentiable. क्या बोला? The function is continuous but क्या नहीं? Not differentiable at a point. किसी तो भी दिए हुए पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है. नाउ then it implies that there is a sharp corner or kink at that point. एक sharp corner होगा, ठीक है.
Now every differentiable function is continuous, but every continuous function need not be differentiable. ये तो बहुत बार हो गया। आगे जब बढ़ेंगे बेटा हम लोग तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे based on whether the function is continuous or not. Now if the function is continuous then find the continuity in its domain. और इन्हीं सब बेसिक नॉलेज के साथ बढ़ते हैं अभी हम लोग हमारे क्वेश्चनरीज के। Now क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 22 and 23. What is given? F of x is equal to modulus of x. So f of x that is equal to greatest function of x. This represent is a greatest integer function. And as we all know that greatest integer function gives us the two values 0 and -1. So accordingly function is not continuous. ये function क्या नहीं रहेगा? Continuous नहीं रहेगा, because this is कौन सा function हो गया ये? Greatest integer function. Move to the second one, that is g of x. G of x is a sin x, and sin x is a trigonometric function, and as we already discussed this, trigonometric function sin, cos and tan are real valued function which are continuous in its domain. It means most appropriate answer is g of x is continuous at x is equal to 0, but f of x is not continuous at x is equal to 0. Move to the next question. Which of the following statement are correct? नीचे दिए हुए कौन से statements correct है वो हमें ढूंढना। So first one is given f of c, f compose x and which is equal to f of x. क्या ये possible है या नहीं है वही चीज हमें देखना। देखिए बेटा सबसे पहले इसे लिखेंगे f of x, और f of x के लिए डिपेंड कर रहा आपके पास कि आप जा कैसे। So 22, 23 both the questions are, again I repeated, 22 and 23 both the questions are based on the direction. So what are the exact direction? F of x is equal to greatest function x, हो गया greatest function x। वैल्यू किसकी निकालनी है? तो f कंपोज f ऑफ x। अभी हम लोग f कंपोज f ऑफ x को लिखा कैसे करते हैं? तो f ऑफ x, ठीक है, पर f ऑफ x की वैल्यू कितनी रहे? तो f ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x, and as it's the greatest function of x, f of this is equal to x. It means first statement is correct itself. Move to the second one, where g of x only when x is equal to 0. So see, g of x is equal to what is given, that is equal to sin x is given. And so what is the value of g of x at x is equal to 0? It means g of 0 which is equal to sin of 0, and sin 0 has value 0, first case. For the second one, that is composition of itself. So g compose g of x which is nothing but जिसको क्या लिख सकते हो? g of x। पर g of x का मतलब कितना हुआ? तो दिए हुए के हिसाब से g of sin x हो। अभी g of x अगर sin x है तो g of sin x कितना हुआ? तो sin of sin x हुआ। आपको ये वैल्यू ढूंढना कहाँ पे है? तो at x is equal to 0 ढूंढ लेते हैं बेटा 0 पे वैल्यू। sin of sin 0 and sin 0 has value 0 and sin 0 again has value 0. See, g of x has value 0 and g of 0 also value 0. It means this is also correct. Move to the third one, that is g compose f compose g of x can take only 3 values. Now see,
फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, देन जी कंपोज, इसके साथ कंपोजिशन बनाना है तो F कंपोज G and this having the X. नाउ एक वैल्यूज को निकालें। सबसे पहले हमारे पास F कंपोज G की वैल्यू निकालना, which is F of G of X, that is F of, but what is the value of G of X? So G of X has value sin X. Now F of X has value this, so this have the value sin X. इसकी वैल्यू हो गई है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin X. Move to the next one. G कंपोज, F कंपोज G of X वाली जो टर्म थी उसे अभी लिखा जा सकता है G of F कंपोज G of X. अभी इतने टर्म की वैल्यू कितनी है sin X, और G of sin X को जब लिख रहे हैं हम लोग तो फिर से पैटर्न में आ जाएंगे sin of sin X. साइन ऑफ साइन एक्स कहां से कहां तक सरवाइव करता है, तो साइन एक्स के लिए -1 to 1, और -1 to 1 के बीच में कौन से वैल्यूज आ जाएंगे, सो -1, फिर दोनों के बीच में 0 और फिर +1. इट मीन्स दिस थर्ड वन कैन टेक्स 3 वैल्यूज, सो थर्ड वन आल्सो करेक्ट. It means select the correct answer using the code. Which one is the correct? First, second and third. Move to the next question. In the question number 24, what exact values are given? So, x tan x upon x tan of 2x upon sin 3x into sin 5x, and the values are function continuous बोला गया है कहाँ पे, at x is equal to 0. So क्या फटाफट कर लेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan 2x अपॉन, क्या अपॉन में आएगा, तो sin 3x अपॉन sin 5x. अभी सोचिए यहाँ पे कि हमारे पास x को काटने के लिए एक x लगेगा, tan के अपॉन के लिए x लगेगा, इसका मतलब टोटल मिला के हो गए x स्क्वायर. न्यूमरेटर में 1x गेट कैंसिल, tan 2x अपॉन x इसका मतलब हुआ 2, sin 3x अपॉन x 3 and sin 5x upon x 5. So our required answer is 2 upon 15, which is lies in our option number C. Move to the next one. What exact values is it? Now function a sin mod of x plus b into e to the power mod of x is differentiable at, function कैसा है, differentiable कहाँ पे, at x is equal to 0. फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब हुआ कंटिन्यूअस तो ही, सो f of x is equal to a sin mod of x plus b e to the power mod of x. ठीक है, डेरिवेटिव लेना होगा हमें, सो डेरिवेटिव्स आर डेरिवेटिव ऑफ दिस f dash of x is equal to a cos of mod of x plus b e to the power mod of x. पर x किसके तरफ जा रहा, तो x tends to 0, it means a cos 0 plus b e to the power 0, that is cos of 0 has value 1, e to the power 0 means 1, it means we are getting a plus b is equal to 0, which is the most appropriate answer for question number 25. Now move to the next question. So what exact values are given here in the question number 26? पहले बोल रहा कि f of x किसे satisfy करा रहा, so f of x is equal to x square sin of 1 upon x. लिमिट किसके तरफ जा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0. ना ये वैल्यू कुछ ऐसे लिखा सकते हैं हम लोग, x साइन 1 अपॉन x और फिर से अपॉन में 1 अपॉन x. इसके लिए तो आंसर है ही है हमारे, साइन 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x के लिए x किसके तरफ जा रहा, 0. इट मीन्स द फर्स्ट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इट्स अ करेक्ट वन.
सिमिलरली फॉर द सेकंड वन, जो कि बहुत डायरेक्ट है बेटा, साइन ऑफ 1 upon x, which is nothing but the sine 1 upon x upon 1 upon x, which gives the answer 0, which is already given. It means what is correct option. So for your question number 26, most appropriate and correct answer is assertion is true, reason is also true, and reason explain the assertions. Now move to the next question. See, read the direction for this questions. Question number 27 and 28 follows this particular terms. सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो हमें ढूंढना है. सो हम यहाँ पे हमें बोल रहा डोमेन स्टार्ट फ्रॉम -π to π, और ये -π to π डोमेन जाते वक्त कहाँ पे ब्रेक हुआ है, 0 और π/2. हमें कंटिन्यूटी ढूंढनी है, whether the function is continuous at x is equal to 0, whether the function is continuous at x is equal to π/2, or which one is a correct statement. तो चलो ढूंढते हैं. सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x प्लस π, but x tends to 0, so 0 plus π, and 0 plus π means π. Second, limit x tends to 0 minus π into cos x, so π into cos of 0, cos 0 has value 1, π into 1, that is equal to π. So this is number 1, this one is the number 2. Two values are given. Move to the next one. क्या मिल रहा, फंक्शन कैसे हो रहा, तो कंटिन्यूअस हो रहा. कहाँ पे, तो एट x इज इक्वल टू 0. सेकंड पे बढ़ते हैं बेटा, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं वो देख. सो लिमिट x टेंड्स टू, अभी जाएंगे π/2 के माइनस के तरफ, कौन सा फंक्शन लेके जाएंगे, सो π into cos of x, it means π into cos of π/2, and cos π/2 has value 0, it means this is π into 0, which is equal to 0. Remark this term as a third one. और एक स्टेप अगर आगे बढ़े तो हमारे पास लिमिट जा रही x टेंड्स टू π/2 प्लस, और π/2 प्लस के लिए क्या है, तो x माइनस π/2 स्क्वायर. बट एज x टेंड्स टू π/2, π/2 minus π/2 0, which is our 4. It means function is continuous at कहाँ पे, तो x is equal to 0. Function is also continuous at x is equal to π/2. So which of the above statement is correct? So both the statement first and seconds are correct here. Move to the next question. See in the question number 28. What exact values are given? The given function is differentiable at x is equal to 0, and the function f of x is differentiable at x is equal to π/2. अभी हमें ढूंढना है डिफरेंशिएबिलिटी, इसका मतलब लेफ्ट राइट दोनों के लिए. फिर से वही, क्योंकि 27 28 दोनों देना था. अभी देख लीजिए बेटा, यहाँ पे ढूंढते हैं आंसर उधर. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए जब जा रहा, तो हमें डेरिवेटिव देना है x प्लस π देना है, और डेरिवेटिव ऑफ x हुआ आपका 1, डेरिवेटिव ऑफ π हुआ 0, आंसर कितना हुआ 1. सेकंड के तरफ मूव अगर करते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव, पाई इंटू कॉस एक्स. बट डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना, तो माइनस साइन एक्स, तो पाई इंटू साइन एक्स हो गया. x कहाँ पे लेके जाना है, 0 पे. साइन 0 की वैल्यू क्या हो 0, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव. इट मींस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. सेकंड के लिए वही लेफ्ट राइट जब करा रहे बेटा, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर π/2,
that is pi cos x. So derivative of this pi cos x, क्या डेरिवेटिव देगा? पाई कीप एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos x is sin x and the value of sin pi by 2 is 1. It means it's a minus pi. राइट हैंड डेरिवेटिव की जब बात कर रहे हैं तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस पाई बाय 2, x टेंड्स टू पाई बाय 2, so 2 into 0 is equal to 0. Function is not derivable, not differentiable at कहाँ पे? तो at x is equal to 0 and x is equal to pi by 2. It means our most appropriate answer for 28 is neither 1 nor 2. 1 भी नहीं और 2 भी नहीं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, that is mod of x. See, that is x is not differentiable. सही बात है, क्योंकि ये नॉट डिफरेंशिएबल क्यों होता है बेटा? बिकॉज व्हेन वी आर कंसीडरिंग द फंक्शन इज इक्वल टू mod of x, so this gives us the two values minus x and plus x. माइनस x कब देता है? तो x लेस देन 0, और ये कब मिलता है? तो x ग्रेटर देन 0. इट मीन्स f dash of x is equal to कहाँ से कहाँ तक? डेरिवेटिव ऑफ माइनस x माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ x1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन mod of x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. ये करेक्ट है. सेकंड के तरफ जाते, फिर बोल रहा mod of x अपॉन x, x is not equals to 0, f of x is equal to 0, x is equal to 0, then f of x does not exist. exist हो रहा या नहीं हो रहा? so, सही बात है. mod of x अपॉन x के दो पॉसिबिलिटीज जाते हैं आपके पास, x अपॉन x माइनस x अपॉन x, एक 1 और दूसरी -1. फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो. ठीक है. Now both the statements are correct. Move to the next one.